जो है it was established in 1967. It's a family-owned Dutch agriculture company based in the Netherlands. And हमारा mission हमेशा यही रहा है to find solution about the issues and pests and diseases in the nature, so that we can prepare our plants, our soil, our root system for future. And it is very important to preserve all this right now, otherwise we will have a lot of issues for our future generations. So from that perspective, Koppert has a mission, and that mission is not just in India but all around the world. We are active in about 120 countries. We have different subsidiaries, different production units, different kind of product categories, right from soil to plant to also root management. And we are a global leader in crop protection, beneficial insects and pollination. And I hope in future in India also we can bring some of our products from Netherlands, which the world is using. I personally feel as an Indian, why should an Indian be deprived of good and safe food? And you can only get that when you have reduction of chemical pesticides and fertilizers. And using our solutions which are sustainable and nature-proof, I think that should be the, I would say, way to go forward for growers all around the world. The Asia Pacific head for Koppert. Koppert is a biological crop protection company from the Netherlands. We are involved in different parts of biological control. So we look at soil health, we look at plant health and pest management and pollination as well. We have been doing this over the past 55 years or so. We originate from Holland. We are still a family-owned company, actually. And it has been a very long journey. But in everything we do, we put the grower in the middle. So we work for growers and we put nature. So everything we do, we find solutions in nature. We replicate them and we try to apply that back into agriculture and in horticulture in order to make sure that we restore the natural balance in crops. We have been working with QUL for the past 3 years, extensively looking at what kind of biological products and specifically the biological products that we have available in India and that we produce in India, focused at soil health and soil restoration and soil cleaning. What is their impact on the soil and eventually on the growing conditions. And I think it's not a secret to anybody is that with the overuse of chemicals it has been affecting a lot the soil. So those studies we have been doing over the past 3 years, and hence we made the launch today of our partnership, because now we are in a position where we say, okay, we have sufficiently established those protocols and we can now confidently roll them out in the market and accompany farmers in making that switch slowly to biologicals. The message would be embrace it. I mean, we are convinced of what we are doing, but eventually the farmer needs to be convinced himself, right? The grower needs to be convinced himself. And I think now with what we have been doing over the past 3 years, there is sufficient evidence, but not scientific evidence, but on the field evidence. Because for me, it's always very important to do those demos and show farmers how things work and the kind of results they can get. So I would really encourage them to be in touch with QUL and with Koppert and go around and see from your peers in the industry, the peer growers of apples, and see, okay, what are the results and what you potentially can see as results and yield and tack on to it, because biological is definitely the future. I will come again, and my team is coming here on a regular basis to support the business as well. So yeah, you will definitely see more of Koppert in Kashmir. जो नेदरलैंड्स की कंपनी है इसका नाम कॉपर्ट है। ये पिछले काफ़ी डेकेड्स से बायोलॉजिकल्स में काम कर रही है मोर देन 100 कंट्रीज़ में। हमने पिछले 3 साल से इनके जो
मेजर प्रोडक्ट्स बायोलॉजिकल्स के हैं वो हमने टेस्ट किए हुए हैं, ट्रायल्स की हुई हैं कई फार्मर्स के साथ इन द फील्ड, जिसके रिज़ल्ट्स फेनोमिनल हैं। और उन्हीं रिज़ल्ट्स को देख के हमने ऑल्दो हमारा टाइप 3 साल पहले हुआ था, लेकिन आज ये लिटरली फॉर्मलाइज हुआ है। और इन बायोलॉजिकल्स की वजह से हमारा गोल जो है कि हमारी जो सॉइल है वो कैसे लॉन्ग टर्म हेल्थी हो, हमारे प्लांट्स कैसे लॉन्ग टर्म हेल्थी हो, ताकि वो डिजीज़ के साथ बाकी चीज़ों के साथ वो निपट पाएँ, और हमारा जो फ्रूट है, जो प्लांट की ग्रोथ है और जो फ्रूट है वो हमारा क्वालिटी निकले आज ही नहीं, 5 साल में नहीं, 20-25 साल जो भी हमारी लाइफ ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना मेरे ख्याल से ये तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए है, हमारे ग्रोवर्स के लिए है, और जो लोग भी ये बनाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमने यहाँ पे हाई डेंसिटी पहली प्लांटेशन 2013 में पूरे इंडिया में हमने पहला ऑर्चर्ड लगाया, तो उस वक्त एक एज एन एक्सपेरिमेंट लगाया ये देखने के लिए कि उसके रिज़ल्ट्स हमारे लिए क्या निकलेंगे। जब तक आपको ये श्योर नहीं होगा कि आपका प्लांट वायरस फ्री, आपका प्लांट पैथोलॉजिकल डिजीज़ फ्री और ट्रू टू टाइप हो, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आज भी हमारे प्लांटिंग मटेरियल इसलिए यूरोप से आता है, क्योंकि उनका नर्सरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो इंश्योर करता है कि ये 3 चीज़ें जो हैं वायरस फ्री, पैथोलॉजिकल डिजीज़ फ्री और ट्रू टू टाइपनेस उनमें हो। अब प्रॉब्लम ये है जो इस वक्त हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, कि प्लांटिंग मटेरियल का ओरिजिन जो है वो ऐसे ऐसे जगहों से है कि वो समझ में ही नहीं आता है कि वो कहाँ से आया हुआ है, और उसकी वजह से हम फिर देखते हैं कि जो चाहे डिज़ीज़ है या कुछ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन की वजह से ही हुआ हो। ये भी हो सकता है कि जो हम रूट स्टॉक लाते हैं, जिस रूट स्टॉक को हम प्रोपगेट यहाँ करते हैं, और उससे भी हो सकता है। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंस्टीट्यूशंस को उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो इक्विपमेंट लाएं, वो ऐसी चीज़ें लाएं जिससे हमें ये पता चले कि अगर किसी जगह भी कोई प्रॉब्लम प्लांटिंग मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो चीज़ ना हो। अदरवाइज़ हम पीछे पड़ जाएंगे। पूरी दुनिया में जो नई वैरायटीज़ आ रही हैं, नए ब्रीड्स जो आ रहे हैं, जो मार्केट में बिकता है, अगर हम पीछे रहें तो वो मैं कहता हूँ कि हमारा बानीहाल के क्रॉस सेफ जाएगा ही नहीं। तो हमें compete करना है उस हिसाब से। लेकिन एज़ यू सेड, जो आप 100% करेक्ट है कि हमने क्या सिस्टम्स बनाए हैं जिससे हम इंश्योर करें कि हमारा प्लांटिंग मटेरियल सेफ़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।